Okay, good morning to all my dear student of class 9th. Hello बच्चों, कैसे हो? So good morning once again to all my dear student. Please join the chemistry live class. As already I have sent the link to you. Just click on that and join the class. All of you. Okay. So now all my dear students, you remember that in our last class what we were discussing? We were discussing the method of the separation. Okay, means suppose if any mixtures is given to you, if you are having any mixture, and how we are able to find out the components from that. Means yesterday, last class, if you remember that how many methods of the separation we have discussed. Methods of separation. Method of separation. Okay, method of separation of components from mixture. Okay, this is our main heading. We are going to discuss the method of the separation of the component, or what we can say the substance. Okay, from any mixture. Means if you are having any mixture, then how we are able to find out the substance? Means, for example, if we are having mixture of salt and water. Okay, now suppose we are having a mixture of the salt and the water. Okay, here हमारे पास एक mixture. Suppose we are having mixture of the salt and the water, and suppose anybody asks to you कि how we are able to find out the component from that. आपके पास एक mixture है, मतलब मैंने आपसे बोला कि suppose आपके पास ये beaker है, और इस beaker में suppose आपके पास salt solution है. Suppose we are having the salt solution. Salt solution से मतलब नमक भी है उसमें और पानी भी है. ठीक. Now suppose this is the particular concept. ये अगर हमारे पास कोई एक solution है, ठीक. Now this is the mixture. This is basically we are having the mixture, and in that mixture what we are having the salt and the water. Now suppose anybody can text me how can we obtain the salt? By which method? Here which method you will apply to find out the salt from the mixture? Anybody can text? If you remember in our last lecture we discussed that. अगर आपको अपना पिछला लेक्चर याद हो तो ये आपने पढ़ा था. Okay, very good, शाबाश. So 2-3 students gave me the answer. So Ashmita, Shruti and Gungun. Very good. So all the 3 students gave me the right answer. By the process of the evaporation, we are able to obtain the salt from the salt solution. Very good. Juhi also gave me the answer. Very nice. So what we can say that, what is the method? The method is called as the evaporation. So by the process of the evaporation we are able to find out the salt from the salt solution. ठीक है, एक ये तरीका हो गया. ठीक, एक आपने ये तरीका पढ़ा था. If you remember that in our last lecture we discussed about the evaporation. आपने evaporation पढ़ा. ठीक. Now suppose I am saying that अच्छा, एक और मजेदार सी बात. Anybody can text me when we will use the evaporation process and when we will use the filtration process. Anybody can text when you will use the filtration process. Anybody can text me the answer. The question is very much important, very much interesting. Any one of you can text me when you will use the process filtration to obtain. Okay, very good. Liquid and solid evaporation. Okay, and when filtration? Shruti, so when you will use the filtration process? Just before writing, think once again. एक बार सोचो. Any one of you can text me when you will use the filtration process and when you will use the. Okay. So Shruti wrote liquid and liquid. No, it's wrong, my dear. Okay, Krishna wrote to filter the impurities from the liquid. देखो, मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं. When you will use the evaporation method, you will use, yes, exactly, very good. So Gungun and Ashmita came with the right answer.
When the substance is not dissolved, you will use the filtration, and when the substance is dissolved, you will use the evaporation method. Very good. और याद रखो दोनों ही प्रोसेस में either you are discussing about the filtration or you are discussing the evaporation. What type of the component? The components are the solids and liquid. याद रखना, ठीक है? और ध्यान से समझो मेरी बात. मतलब मैंने आपसे बोला कि whenever you are using the evaporation method और एक बार अगर आपने फिल्ट्रेशन मेथड यूज किया, बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा. इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है. ओके परी, गुड मॉर्निंग. आई थिंक यू ज्वाइन लेट बट नो इशू, कोई बात नहीं. चलो इसमें क्या है, सॉलिड्स इन लिक्विड है ना, ये भी इसमें है. इसमें क्या है, यहां पर सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है और साथ ही साथ लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है ना. यहां पर भी क्या है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. ये देखो सॉलिड्स एंड लिक्विड. बट व्हाट इज द बेसिक थिंग, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट कि हियर यू विल यूज व्हेन सॉलिड विल कंप्लीटली डिसॉल्व इन लिक्विड. जहां पर ये लिक्विड में पूरी तरह से डिसॉल्व होंगे, और यहां पर क्या होगा, व्हेन solids will not dissolve in liquid. Okay, so is it okay to everybody? Is the concept okay to everyone? कि when you will use the evaporation method and when you will use the filtration method, please text me your answer. Is it okay to everybody? This concept is okay, or anybody is having any doubt? Okay, very good. Shabash. So all the students are saying yes, they are absolutely right and they have understood the topic. So Shruti, Ayushi, Vaibhav, Ashmita, Krishna, Gungun, Juhi, Parimal, Harshal, Rajni, Pari and Aryan. Okay, very good. Shabash. Now, तो आपने क्या किया, लास्ट लेक्चर पे ये पढ़ा है ना, and one more method we discussed in our last lecture, that was the centrifugation. Okay, if you remember here, in our last class we already discussed one more method of the separation from the mixture, and that was the centrifugation, है ना. एक मेथड आपने और पढ़ा था, and that was the centrifugation. That was the centrifugation. Anybody can text me when we will use the centrifugation method. Anybody can text when we use. ओके नंदनी रोड, गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर लेट. कोई बात नहीं नंदनी, नो इशू, कोई बात नहीं. जो लेक्चर है वो ऑटोमेटिकली सेव है, यू कैन ऑलरेडी ब्राउज, नो इशू. गुड. सो एनीबॉडी कैन टेक्स्ट व्हेन यू विल यूज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. एनीबॉडी कैन टेक्स्ट, any one of you can text me when you will use the centrifugation method. In our last class we discussed. Anybody can text? No one? कोई नहीं? A very basic concept is that we have to use the centrifugation method when colloidal type of the solutions are there, when the particles suspended in a liquid. मैंने आपसे बोला था कि अगर हमारे पास मिल्क का सैंपल है और मिल्क के सैंपल से अगर हमें क्रीम निकालनी है, so by which method you will use centrifugation. ठीक, जबकि आपको पता है. अच्छा, anybody can text me, anybody can text centrifugation method. Centrifugation method used in which type of the mixture? Homogeneous mixture or the heterogeneous mixture? In which type of the mixture you will use? Okay, very good, Harshal. Shabash. Harshal gave me the right answer. Suspended particles of the substance form liquid. Very good. So anybody can text in that centrifugation process, which type of the mixture we have to take, either homogeneous or heterogeneous. Okay, very good, Ashmita. We have to use the heterogeneous mixture. Okay, so Ashmita, Shruti, Harshal, Juhi, Vaibhav all gave me the right answer. We have to always take the heterogeneous mixture. है ना, यहां पर जो मिक्सचर होगा वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा. ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके, वेरी गुड मनोज, परिमल एंड कृष्णा, परी, वेरी गुड. ठीक, तो हेटेरोजेनियस होगा. और यहां पर क्या होता है, जहां पे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस,
मतलब we have to take the suspended particles from liquids, है ना। लिक्विड में से अपन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन, लिक्विड मिल्क था, ब्लड है, अब ब्लड क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ब्लड में से प्लेटलेट्स निकाल रहे हो, प्लाज्मा निकाल रहे हो, मतलब लिक्विड में से क्या निकाल रहे हो, सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब जो पार्टिकल पूरी तरह से उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन का रेंज, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी द रेंज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, anybody can text what is the size of colloidal solution, what is the size of the particle, anybody can text me size of the particle, what is the size of the particle of the colloidal solution, किसी को याद है? Can anybody text me what is the size of the particle of the colloidal solution? याद रखो, ये बड़े काम की चीज है, दैट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, है ना। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, दिस इज द साइज ऑफ द पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन अवर लास्ट क्लास वी डिस्कस दीस थ्री मेथड, सो आई थिंक ऑल द three methods are okay to everybody, are all the three methods are okay, that is evaporation, filtration and centrifugation, इनमें से कोई डाउट तो नहीं है? चलो, now the next method we are going to discuss, that is the separating funnel. Separating funnel. The next method we are going to discuss by the separating funnel, है ना। separating funnel कैसे करते हैं, ये एक नया प्रोसेस है and how we have to use it. Now that is a very much important part. Actually क्या है, when we will use the separating funnel, we will use the separating funnel when we are having the mixture of, कैसा mixture होगा, when we are having the mixture of liquids in liquids. बहुत मजेदार बात है, liquids in liquid. जब लिक्विड में लिक्विड मिलेगा, वो भी कैसा लिक्विड, इमिसिबल, immiscible, when we are having the immiscible liquids and liquid. बहुत मजेदार सी बात है, देखो। now all my dear, you please don't confuse कि लिक्विड और लिक्विड का मतलब हर बार सेपरेटिंग फनल नहीं होगा। हमें कैसे लिक्विड चाहिए, which type of the liquid you will use, we have to take the such type of the mixture in which immiscible liquids, जैसे anybody can text me the example or you please see that, no need to write it, oil in water, ऑयल इन वाटर, है ना, ऑयल इन वाटर। और अब देखो ना, ऑयल इन वाटर, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी विल ऑयल डिसॉल्व इन वाटर, विल ऑयल डिसॉल्व इन वाटर और विल ऑयल मिक्स विद वाटर, क्योंकि दोनों लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं क्या? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट, कैन ऑयल मिक्स विद वाटर? ओके, वेरी गुड, शाबाश। ऑयल एंड वाटर कैन नेवर बी मिक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। मतलब दोनों मिक्स नहीं होंगे, फ्लोट करेगा, मिक्स नहीं होगा। तो वो कैसा मिक्सचर हो गया, विच टाइप ऑफ द मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द लिक्विड एंड लिक्विड, वो मिक्सचर लिक्विड एंड लिक्विड का होगा, बट कैसे लिक्विड हो गए, द इमिसिबल। सो व्हेनेवर वी आर हैविंग द मिक्सचर ऑफ द इमिसिबल लिक्विड, देन व्हिच हाउ वी आर एबल टू what we can say separate, ठीक है ना। मान लो हमारे पास अगर आ जाए कि ऑयल इन वाटर का अगर मिक्सचर आ जाए और मैं इसे बोला जाए कि हाउ वी आर एबल टू सेपरेट द ऑयल फ्रॉम दिस मिक्सचर, है ना, या हाउ वी आर एबल टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम द मिक्सचर, सो बाय व्हिच मेथड, सेपरेटिंग फनल। बाय द सेपरेटिंग फनल वी आर एबल टू जस्ट व्हाट वी कैन से दैट, बाय व्हिच वी आर एबल टू सेपरेट दीज एलिमेंट्स आर देयर। इस मेथड से अपन सेपरेट आउट कर पाते हैं, ठीक है ना। सेपरेटिंग फनल एक्चुअली क्या है, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, है ना, ये बेसिकली डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और जब कभी भी अपन लिक्विड और वाटर को अलग करते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो लाइटर
है ना, जो लाइटर है वो ऊपर रह जाएगा और जो भारी है वो नीचे से निकल जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट वी कैन से दैट बेसिकली इट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे मैंने बोला ऑयल इन वाटर, अब ऑयल इन वाटर में क्या हो जाएगा, ऑयल लाइटर है, वाटर हैवी है डेंसिटी के हिसाब से, तो क्या होगा सेपरेटिंग फनल में ऑयल ऊपर रह जाएगा और पानी धीरे से नीचे निकल जाएगा। So what we can say that this is the basic concept of the separating funnel. Just a minute, I am trying to show the diagram, है ना, just a minute. एक बार मैं आपको सेपरेटिंग फनल का डायग्राम दिखाता हूं, एक मिनट, तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हाउ द सेपरेटिंग फनल वर्क्स बेसिकली, है ना, सेपरेटिंग फनल वर्क कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट सी चीज है। जस्ट अ मिनट। बट टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है ये कि हाउ वी हैव टू यूज द जस्ट अ मिनट डियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डाउनलोड वन पिक एंड देन आई विल शो। या ओके, आई थिंक यू कांट सी इट। ओके, आर यू एबल टू सी दिस? Are you able to see this photo? Just text me. Are you able to see it? Okay. Because it's not very easy for me. ये एक separating funnel है ना? Everybody can see this. Okay. Now what will happen? क्या होगा देखो, इस पिक में ये जो है ना, ये मिक्सचर है, ये this is the mixture of the oil in water, है ना, ये ऑयल इन वाटर का मिक्सचर। अब क्या होता है, जब सेपरेटिंग फनल आप लेते हो तो जो लाइटर है, जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा, भारी पार्ट नीचे आ जाएगा और जैसे ही आप स्टॉपर खोलोगे वो नीचे निकल जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेटिंग फनल। मतलब सेपरेटिंग फनल में आप कैसे लिक्विड लोगे, सेपरेटिंग फनल में आप ऐसे लिक्विड लोगे जो दोनों में मिक्स होते हैं, जो दोनों में मिक्स होते हैं। अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, द सब्सटेंस व्हिच इज लाइटर, the substance which is the lighter that will be in upper layer and the substance which is the heavier, है ना, और जो substance heavier होगा and the substance which is the heavier, जो heavier है वो नीचे आ जाएगा और जैसे ही आप ये स्टॉपर खोलोगे ना तो जो भारी वाला पार्ट है वो नीचे, जैसे मैंने बोला पानी और तेल का मिक्सचर ले लिया तो ऑयल ऊपर रह जाएगा, जब आप इस स्टॉपर को खोलोगे तो पानी नीचे से बह जाएगा और केवल ऊपर ऑयल बच जाएगा। So this is the concept by which we are able to separate out the component from that mixture. So the very much important part is that how we are able to separate the mixture by the separating funnel. So anybody can text me when you will use the separating funnel. Now the question came in your code. Just type. देखता हूँ सबसे पहले कौन टाइप करता है, when you will use the separating funnel method. Anybody can text? When you will use the separating funnel method. Anybody can text? जल्दी से लिखो तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं। When you will use the separating funnel method. Yes, very good. To separate the immiscible liquid. Very good. शाबाश नंदनी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है ना, वेरी गुड कृष्णा, शाबाश, सारे बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। But today what I am observing, the strength is not too much, है ना, आज केवल 18-20 बच्चे ही मुझे दिखे हैं मैक्सिमम, तो ये ठीक बात नहीं है भाई। हफ्ते में एक दिन आपसे मुलाकात होती है ना, तो उसमें तो डिड यू एंजॉय माय लेक्चर और नॉट? गुड सर। ओके, यू प्लीज टेक्स्ट मी द ऑनेस्टी, टेक्स्ट योर रिप्लाई विद ऑनेस्टी। डिड यू एंजॉय द लेक्चर? डिड यू एंजॉय द लेक्चर? So you please inform to your friends, colleagues, कि all of you please join the class, है ना, because very less number of today the last class was very good. पिछले क्लास में मैक्सिमम सारे बच्चे थे और आज बच्चे मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। सुबह का टाइम है, देर से सो के उठने लग रहा है ना, लॉकडाउन का भरपूर मजा उठा रहे हैं, चलो कोई नहीं, ठीक ना। सो दिस इज द सेपरेटिंग फनल बाय व्हिच वी आर। अब सवाल आता है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सर व्हेन वी आर हैविंग द इमिसिबल लिक्विड, सो देन वी यूज द सेपरेटिंग फनल।
what happen when we will have the miscible liquid. अब अगर हमारे पास miscible liquids आएंगे तो क्या करेंगे? बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट. When we are having the miscible liquids, then how we are able to just separate out these two? कैसे करेंगे? कोई बताएगा? Now the next question is, suppose we are having the mixture of miscible liquids. अब हमारे पास miscible liquids आ गए, तो कैसे करेंगे देखो. Now the next one is, suppose we are having the mixture of miscible liquids, है ना. अब miscible liquids आ गए, है ना, miscible liquids बन गए. अब अगर miscible liquids बन गए तो कैसे करेंगे? That is also very much important method. Yes, very good. By the process of distillation. Very good. By the process of distillation. By the process of distillation. Take distillation is the method. Okay. These Nandani, Shruti, Krishna, Gungun, Harshal and Juhi, Ashmita, Monojoy. इन सारे बच्चों ने फ्रैक्शनल लिखा है. Any one of you can text me what is the difference between, anybody can text what is the difference between distillation and fractional distillation. Anybody can text. सोचो, बहुत बढ़िया सवाल है. साइंस के बंदे हो तो साइंटिफिक अप्रोच रखो तो मजा आएगा. Anybody can text. What is the difference between distillation and fractional distillation? ये बड़ी मजेदार सी चीज है, ये मालूम होना चाहिए, तभी टॉपिक पढ़ने का मजा है. Anybody can text. Anybody can text. Anybody can text. Okay. So Nandini wrote difference in their polymer. But Nandini, can you dear बच्चा क्या बता सकते हो कितना डिफरेंस होना चाहिए? देखो मैं बताता हूं. डिस्टिलेशन कब होता है? When difference in boiling point, when difference in boiling point is greater than 20 डिग्री सेल्सियस. जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ध्यान रखना, जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, सो देन बाय द सिंपली डिस्टिलेशन मेथड वी कैन यूज, है ना. अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री से ज्यादा है तो सिंपल आप डिस्टिलेशन से कर सकते हो. और फ्रैक्शनल कब होता है? फ्रैक्शनल तब होता है व्हेन difference in the boiling point, when the difference in the boiling points of liquids is less than 20 डिग्री सेल्सियस. तो दो लिक्विड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट अगर 20 डिग्री से ज्यादा है, सो देन ओके, वेरी गुड आयुषी, शाबाश. आयुषी, गुनगुन, all the student give me the right answer. Very good. तो अगर दो लिक्विड के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री से ज्यादा है, so then which method you will apply? Simple distillation. When the difference in the boiling point less than, बहुत कम हो गया, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री से कम अगर है, तो वहां पर क्या करोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. So this is the method. तो इसलिए क्या है कि कभी कभी हमको थोड़ा सा किताबों से हट करके थोड़ा और ज्यादा बेहतर पढ़ना चाहिए कि when you will use this method. मुझे पता था पहले बार में सब बच्चों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखा. आंसर वाज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट अगर कंपटीशन में बैठोगे, साइंस ओलंपियाड का पेपर दोगे, पॉलिटेक्निक का पेपर दे दोगे 10th के बाद, तो 9th 10th का उसमें कवर होके आएगा. तो वहां पर ये मालूम होना चाहिए. 12th के बाद आप एनडीए का पेपर दोगे तो वहां पर भी 9th 10th के क्वेश्चन बहुत आते हैं. बहुत सारे बंदे इसमें होंगे जो डिफेंस में जाना चाह रहे होंगे. तो वहां पर ये साइंटिफिक अप्रोच याद रखो कि व्हेन यू विल यूज दीज मेथड्स, है ना. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री से कम तो फ्रैक्शनल, 20 डिग्री से ज्यादा तो फिर सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यू विल यूज ओवर देयर. चलो, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू गिव वन होमवर्क टू यू. एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं. आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद आंसर डालना एंड प्लीज गिव योर आंसर इन द ग्रुप.
steam distillation. Steam distillation. What is steam distillation? ये एक नया क्वेश्चन दिया है मैंने, जो 9th क्लास से थोड़ा सा ऊपर का है, बट डिस्टिलेशन पढ़ा है तो ये भी मालूम होना चाहिए, है ना? तो टुडे आफ्टर दिस क्लास यू विल सर्च एंड जस्ट टेक्स्ट योर मैसेज इन अवर ग्रुप में डालना, तो पता चलेगा कितने कितने बजे, या यू कैन सेंड मी आल्सो, इट्स अप टू यू. सो यू प्लीज सर्च व्हाट इज अ स्टीम डिस्टिलेशन. तो आज के बाद डिस्टिलेशन वाला काम खत्म हो जाएगा. डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल क्या होता है, स्टीम क्या होता है, ये पढ़ के रखो, ठीक है ना? विल यू डू दैट? करोगे ये काम? ऑल ऑफ यू, विल यू सर्च इट? विल यू सर्च इट और नॉट? These two methods only. Okay. So this is all about the distillation. Very good. Badhiya. Shabash. Very good. So now I'm going to wind up my today's lecture. मैंने पहले ही बोला था, है ना? थोड़ा सा पढ़ो बट बिंदास पढ़ो. जमाना T20 का है ना? जमाना IPL का है, तो आपको पता है केमिस्ट्री का क्लास में ऐसे ही लेके आता हूँ, है ना? कुछ आज अनलकी बच्चे हुए हैं जो लेक्चर नहीं ले पाए हैं, उन्हें बाद में समझ में आएगा. बट द गुड थिंग इज दैट इन दिस प्लेटफॉर्म द लेक्चर विल ऑटोमेटिकली सेव, सो दे कैन वॉच इट लेटर आल्सो. ठीक, तो फिर से एक बार, बढ़िया पढ़ा, थोड़ा पढ़ा बट बिंदास पढ़ा, ठीक है? सो द नेक्स्ट लेक्चर अगेन आई विल टेक ऑन द कमिंग सैटरडे, and on that your chapter will finish. Hope so. On the coming Saturday I will start your next chapter. Okay, so thank you so much dear. Goodbye, take care, sabah khair, khuda hafiz. Thank you.